Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time, and now the headlines. The police have arrested a suspect in connection with the knife attack in Solingen, DW News reported, citing Interior Minister of Northern Rhine-Westphalia, Herbert Reul. Israel has declared an emergency for the next 48 hours amid the country's escalating tensions with Lebanon, according to the Times of Israel. Lebanon-based militant group Hezbollah and Israel both announced large-scale military operations against each other on Sunday. In response to the threat, the Israel military initiated preemptive strikes on targets in Lebanon. The People's Democratic Party on Saturday unveiled its manifesto for the upcoming assembly elections, promising to restore Jammu and Kashmir to its original status and advocate for regional cooperation between India and Pakistan. Now the news in detail. On Saturday, the People's Democratic Party unveiled its manifesto for the upcoming assembly elections, promising to restore Jammu and Kashmir to its original status and advocate for regional cooperation between India and Pakistan. PDP President Mehbooba Mufti presented the manifesto at the party headquarters in Srinagar alongside senior leaders. The manifesto emphasizes the party's commitment to reinstating the constitutional guarantees that were previously removed, ensuring the protection of the region's rights and addressing the concerns of its people. This release marks a significant step in the PDP's electoral strategy, reflecting its focus on regional autonomy and diplomatic engagement. पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो। गुलमर्ग में क्यों? बाहर के इंसान को लीज देनी है। होटल की लीज खत्म करो क्योंकि अडानी अंबानी को लीज देनी है। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट राइट टू लोकल्स इन ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकल्स को, और जो हमारी लीज है होटलियर्स की, मकान वालों की, जिसको ये एकदम खत्म करना चाहते हैं, हम उसमें भी चाहते हैं कि जो लोकल्स है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। केसीसी लोन को हम वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे। और मंडियां, जैसे कि आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। पर हम हॉर्टिकल्चर में एक काम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पर हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो है वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले बाहर के सेब के मुकाबले में। इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकती, पर जो मुझसे हो सकता है यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले तो जितनी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है, 1 साल के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फास्ट ट्रैक रिक्रूट में उनकी भर्ती करेंगे और साफ शफाफ तरीके से, जैसे पुलिस में भर्ती हुई थी, जैसे रहबर तालीम में मुफ्ती साहब के टाइम में भर्ती हुई थी। 60,000 डेली वेजर जिनको हम रेगुलर करने के लिए हमने सब कुछ किया था, वो पेंडिंग है, उसको हम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा लागू करेंगे। जो कुक्स होते हैं स्कूलों में जिनको 1,000 रुपए मिलता है उनको 2,500 करेंगे। होम गार्ड्स की हम ऑनरेरियम बढ़ाएंगे। रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफर का हम पॉलिसी लाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एरिया अलाउंस जम्मू कश्मीर पुलिस को देने की बात है। रेगुलराइजेशन ऑफ एसपीओज और मिनिमम वेजेस एक्ट की बात है। In a major decision, Prime Minister Narendra Modi-led cabinet on Saturday approved the unified pension scheme for government employees, providing assured minimum pension and family pension. The significant move aims to provide assured pension, family pension and assured minimum pension to the central and state government employees. Union Minister Ashwini Vaishnaw shared the information during the media briefing after the cabinet meeting.
He said that the center constituted a committee which held over 100 meetings with several top organizations including the RBI and World Bank. Based on the recommendation of the committee, the UPS was approved in the cabinet meeting on Saturday. Around 23 lakh government employees of the central government would benefit from the UPS, the minister said, adding that they will have the option to choose between the new pension scheme and UPS. Israel has declared an emergency for the next 48 hours amid the country's escalating tensions with Lebanon, according to the Times of Israel. Israel's Defense Minister Yoav Gallant declared an emergency. This comes as a special situation in the home front, which enables the IDF Home Front Command to issue restrictions. In emergencies, the legal term special situation is used to give authorities more authority over the civilian population, simplifying attempts to protect them. It is valid for 48 hours unless extended by cabinet ministers. As tensions continue to rise, the Israeli public remains on high alert, bracing for the possibility of further incidents. Earlier today, Israel Defense Forces spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari warned the Lebanese citizens who are in southern Lebanon of possible attacks by Israel in retaliation to Hezbollah strikes. In the near future, Hezbollah will launch rockets and possibly missiles and unmanned aerial vehicles towards the territory of the State of Israel. Accordingly, life-saving instructions of the Home Front Command will be distributed in the various regions. The Home Front Command will update the areas where one must stay near the protected area or inside the protected area, Hagari said. We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news. This is my Northeast, and I am Mirabai Chanu. Here, life is not that easy. That is why the people here don't give up so easily. Really, the passion too is super solid. Even if the earth shakes, their courage is unshakable. Here, every house has a star, and Star Cement was born in this very land. Star Cement, हर घर में star. गरम ते पेट और मन के ठंडा रखे तो की मुखी खाली मीठा है लगे इदु हेल्दी আছে UHT treated और सफा भी আছে थर्ड इदु फ्रेश আছে और मजा भी वाओ केविंटर लस्सी मीठा भी हेल्दी भी केविंटर लस्सी मीठा भी हेल्दी भी RCF दालमिया सीमेंट है RCF एक्सपर्ट यानी रूफ कॉलम और फाउंडेशन एक्सपर्ट दालमिया सीमेंट RCF स्ट्रॉन्ग तो घर स्ट्रॉन्ग Welcome back. Lebanon-based militant group Hezbollah and Israel both announced large-scale military operations against each other on Sunday. According to a statement from Hezbollah, an Iran-backed group, more than 320 Katyusha rockets were launched targeting key Israeli military sites. In response to the threat, the Israeli military initiated preemptive strikes on targets in Lebanon. The IDF announced these strikes early Sunday, stating that they had detected preparations by Hezbollah for large-scale attacks on Israeli territory. Israel Air Force fighters jets have been deployed to neutralize these threats, focusing on Hezbollah positions that pose an immediate danger to Israeli civilians. This escalation comes after weeks of growing tension, with Hezbollah and its regional ally, Iran, vowing to avenge the assassination of its military commander, Fuad Shukr, last month. The group has called the attack on its commander as a direct provocation and an act of war. Moving on, the police have arrested a suspect in connection with a knife attack in Solingen, DW News reported.
citing Interior Minister of North Rhine-Westphalia Herbert Reul. Reul told German TV that a real suspect who police had been looking for all day has been nabbed, but didn't clarify whether he was talking about one of the two people who had already been arrested. He further said the man was highly suspected of the crime and that evidence had been found. The arrested suspect's clothes were dirty and covered in blood. 3 people were killed in the stabbing in Solingen and 8 others were wounded, including 4 in critical condition on Friday evening. The Islamic State IS group claimed responsibility for the deadly knife attack, DW News reported. In a statement on social media, IS Amaq media wing said the knifeman was a soldier of the Islamic State who targeted a Christian gathering in what it said was revenge for Muslims in Palestine and everywhere. However, these claims could not be independently verified according to DW News. The attack happened at the Festival of Diversity on a central square, the Front Hof. The festival is being held in the city over the weekend to mark the 650th anniversary of its founding. The 3-day festival started on Friday according to the festival's website, and it was supposed to include music, food, performances and family-friendly entertainment. Meanwhile, several German leaders have called for stricter gun laws after the incident. On the Waqf Amendment Bill 2024, AIMIM MP Asadun Owaisi on Sunday, while speaking to the media person, said that in Chapter 11 of the Structure Committee, there is a mention of Waqf properties, in which 6 states have been mentioned where the government has taken over the Waqf properties. In Delhi, the government has taken over 200 properties of the Waqf, and the Modi government is trying to eliminate Waqf by user. Owaisi also mentioned and stated that the government is asking to register all the properties through deeds covered under Waqf. कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो, जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा? बताओ आप, कौन सा कलेक्टर देगा? और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। तो अब रेंट का आप बोल रहे ना, यकीनन रेंट बढ़ना चाहिए। तो सच्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई, उसको दे दो आप। और इसी आपके सवाल से रिलेटेड एक बात है कि जैसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी इविक्शन पावर्स है, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं है। आप समरी इविक्शन पावर्स दो हमारे को, ताकि एनक्रोचमेंट निकाल सकें, ताकि जो किराया नहीं दे सका उन पर एक्शन ले सकें, या कम किराया दे रहा है। अच्छा, आप किराया नहीं देने की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक स्पीच है 2013 की पार्लियामेंट में, जब ये 2013 का बिल आया। आपको मालूम, कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते, उन्होंने महीने को किराया क्या देते? घर का 150 रुपये। प्राइवेट छोड़ो आप, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 150 रुपये किराया देते उन्होंने। अब 150 रुपये, इतना बड़ा घर में रहे कलकत्ता में, 150 रुपये किराया कोई है क्या? बोलो आप, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त है जब मस्जिद में जाकर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। We'll be right back after another break, so stay tuned for more news.
Hello Nagaland, Unison Hearing Clinic, Dimapur para ekta free hearing checkup organize kuri ase aru yate hearing aids laga saman bishi de super summer discount bi dibole ase. Free hearing camp do August 28 to 29 aru 30 de thagibo. Phujur 9 am pra sham 5:30 pm tak. Hunibole diktar thaga sob clinic de ahibole swagat ase aru checkup do free hobo. Free camp de bahar para ahya certified audiologists para hearing capacity test kurubo aru latest digital hearing aids kan chulabole trial dibo sob free para. Moikan lukute hearing aid brands sob laga products ase battery bra operate kuriya laga recharge kurubole pariya laga kan pahade natikhya laga alag shapes sizes aro colors laga hearing aids pai jabo itu lukute 100% waterproof thaga aro phone lukute connect kurigina calls aro videos kan bi sabole pariya laga technology kan pai jabo itu super summer sale de digital hearing aid kinya sob de 20 to 30% discount tak diase aro attractive exchange offers kan bi ase mane apni khan laga burana hearing aid anigina nijor choice laga latest product exchange kurigina loi jabole paribo apni khan laga pacha parents aro grandparents kun hunibole diktar pai taikan ge anigina check up kuribi aro exciting offers kan laga faida bi uthabi. In ordinary cement, the TMT bar catches rust and weakens the dhalai. Only Star Dhalai Master solidly holds the dhalai. Solid dhalai, mazboot ghar. Star Dhalai Master. Welcome back. Taiwan has launched a strong protest against Beijing for using economic pressure to interfere in the politics of the self-governed island after a Taipei-based hotel chain apologized for excluding the Chinese flag from Olympic decorations at its Paris Olympics hotel earlier this month. Citing Taiwan's Ministry of Foreign Affairs, Focus Taiwan reported that China has continuously coerced foreign businesses into adhering into its political goals through the use of boycotts, penalties, tax, audits and regulatory infractions. The ministry claimed that Beijing's political maneuvering undermined the rules-based international order and normal business practices. The Taipei-based Evergreen Group, according to Focus Taiwan, issued an apology on Friday this week after a Chinese influencer said in a TikTok post on August 13 that he did not want to check into the Evergreen Laurel Hotel in Paris because the Chinese flag was not one of the flags flown in the lobby. The Evergreen Laurel Hotel's Shanghai and Paris locations were taken down from booking platforms by several Chinese travel portals shortly after TikTok was uploaded and circulated via Mandarin-speaking communities around the globe, reported Focus Taiwan. Home Minister Amit Shah on Saturday chaired a review meeting on Naxalism in Chhattisgarh, where he assured that the Modi-led central government will eradicate the Naxalism from the face of India. Maintaining his firm stance on wiping out Naxalism, he also added the time has come to end the leftist extremists once and for all with a proper and ruthless strategy as it poses challenge for democratic system. बहुत पुरानी नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवादी क्षेत्र में नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजना का 100% सैचुरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति और प्रगति के रास्ते में जो बाधाएं हैं इसको दूर करने के हेतु ये मीटिंग थी। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। हम सबका मानना है कि ये वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण
करीब करीब 17,000 लोगों की जान गई है। 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया। अब तक के वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगस्त महीना होने के बावजूद भी इस वर्ष में हम कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटेजी के कारण 4 दशकों के बाद एमपी के चांदा मेटा गांव में पहली बार इस लोकसभा में मताधिकार का प्रयोग हुआ और सुकमा के 6 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार 4 दशक के बाद आदिवासी भाई बहनों ने मताधिकार का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि एक प्रकार से ये सिक्योरिटी फोर्सेस की विजय है, लोकतंत्र की विजय है। आज हमारे सीएपीएफ के जवान वामपंथी उग्रवादियों का सामना करने के साथ साथ विकास के कामों की भी निगरानी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.